Now guys, as I told you students while teaching you a law, that the law of diminishing marginal utility is in fact the biggest or the longest law. Normally हम लोग सब बाकी सब laws पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? We maximum have, I can say, assumptions and exceptions. That's it. Now this is one law where we have assumptions, exceptions, limitations, and then we also have the importance. So in this particular lecture of us, we are going to concentrate on the next 2 points. That is the criticisms or the limitations of the law of diminishing marginal, I can say, utility, and then we also learn about the importance, I can say. Yes, everybody? लेकिन सबसे पहले we need to focus that what are the limitations, I can say, or how the law of DMU has been criticized, I can say. Yes, everybody? Guys, if I ask you one simple thing, which is the biggest limitation of this particular law? Which is the biggest drawback or which is the biggest criticism of this particular law? My first point is cardinal measurement of utility. Yes, everybody? भले प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया, yes, everybody? लेकिन कितना बकवास assumption? Is it, yes, can you ever dream also कि आप अपने यूटिलिटी लेवल को नंबर के फॉर्म में मेजर कर पाओगे? नहीं. तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने यही बात पे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को बहुत ही क्रिटिसाइज किया. Is it clear, everybody? So the first limitation becomes, I can say, cardinal measurement of utility. It says that utility is a subjective concept. It varies from person to person. It is a psychological feeling. Yes, everybody? It is impossible to measure utility in terms of numbers. Yes, everybody? It is impossible to measure utility in terms of numbers. Yes, everybody? लेकिन एक बात है, अगर यूटिलिटी को मेजर ही करना है तो नंबर के फॉर्म में मेजर मत करो, कार्डिनली मेजर मत करो. हाउ यू कैन मेजर? यू नो, you can measure utility ordinally. Now what is ordinal measurement? जब आप बोलते हो कि yes, पहले एप्पल से 8 मिला, सेकंड एप्पल से 6 मिला, थर्ड एप्पल से 2 मिला, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट. लेकिन आप मम्मी को ऐसा बोल सकते हो कि मम्मी, हाँ, मेरे को दूसरे एप्पल से पहले एप्पल की तुलना में कम सेटिस्फैक्शन मिला, हाँ, मुझे तीसरे एप्पल को से फॉर एग्जांपल कम सेटिस्फैक्शन मिला एज कंपेयर टू सेकंड वन. आप ऐसा मेजर कर सकते हो, आप उसको इससे फॉर एग्जांपल कंपेयर कर सकते हो. Getting it, everybody? But it is impossible to measure it in terms of numbers. It is impossible to measure cardinally, students, I would say. Yes, everybody? तो हमारी बुक में वही लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Yes, it is impossible to express utility in numbers. Being utility subjective cannot be measured in a cardinal measure, but can be measured ordinally. That is, utility can be compared from the consumption of different units of the same commodity. Is it clear, everybody? अब comparison कर सकते हो, हम उसको बोलते हैं ordinal measurement is possible, but cardinal measurement is impossible. Are you following, everybody? समझ में आया सब लोग को? Yes, sir. Second limitation, constant marginal utility of money. आप लोग को मैं एक बात बताता हूं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम और कांस्टेंट फॉर एवरी पर्सन. मतलब यहां समझो कि अगर 10 जन बैठे हैं और 10 जन को फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का नोट दे दिया, तो ये लॉ अज्यूम करता है कि 10 जन को वो 100 रुपए से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा. लेकिन सब लोग ने ना बोला. इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव स्टूडेंट्स, आई कैन से, कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी. यहां लॉ बोलता है marginal utility of money remains constant, but practically marginal utility of money does not remain constant. It varies from person to person. It varies from person to person. Yes, everybody? For a rich person, marginal utility of money is less, but for the poor person, marginal utility of money is high. Yes, everybody? क्योंकि rich के पास बहुत पैसा है, अगर मैंने उसको 100 रुपया दे भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. yes, उसको क्या मिलेगा? वो 100 रुपए से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. लेकिन वो जो गरीब है, जब मैंने उसको 100 रुपया दिया तो वो उससे बहुत खुश हो गया. That means for the poor person, students, I can say, marginal utility of money is more, I can say. Is it clear, everybody? So constant MU of money is not possible. It differs from person to person. Yes, it differs from person to person, and even for the same person, language बहुत अच्छा है, and even for the same person, it differs over a period of time.
यस एवरीबॉडी, अभी 25 साल पहले मैंने अगर आपको पैसा दिया होता, से फॉर एग्जांपल आप तब बहुत गरीब थे, तो आपको वो पैसे से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। आज 25 साल के बाद आप बहुत पैसे वाले हो गए, आज मैंने आपको वापस से पैसा दिया, तो वही आदमी को जो पैसों से पहले बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था, अब वही आदमी को पैसे से क्या मिल रहा है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड स्टूडेंट्स, आई कैन से द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज चेंज्ड, आई कैन से। Is it clear everybody? So constant marginal utility of money is not possible. It differs from person to person, and even for the same person, it differs over a period of time. Is it clear everybody? All right? Yes sir. Third point कौन सा है? Indivisible goods. याद है हमने assumption में एक point पढ़ा कि भाई commodity कैसा होना चाहिए? Divisible. Yes everybody, मैंने आपको watermelon का example दिया है कि हमारे घर पे जब हम watermelon लेके आते हैं तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं सो दैट हम उसको छोटे पार्ट्स में कंज्यूम कर सकें। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जो इनडिविजिबल है, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कार इज इनडिविजिबल। हाँ, टेलीविजन, टीवी फॉर एग्जांपल इज नॉट डिविजिबल, सो लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इनडिविजिबल गुड्स, आई कैन से। यस एवरीबॉडी, नाउ व्हाई द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल? Law is not applicable in the case of indivisible goods like TV, car, etc. because they are purchased after a long interval. आज आपने एक कार खरीदा तो अगला कार आप कब खरीदोगे? 2-5 साल के बाद खरीदोगे। आज आपने घर पे नया टीवी खरीदा तो अब अगला टीवी कब खरीदोगे? 2-5 साल के बाद खरीदोगे। Is it clear? Yes, is it possible कि आप उसका continuous consumption करोगे? It's not possible, students, I can say. Is it clear everybody? इसीलिए यहां बोला जाता है कि yes, the law is not applicable in the case of indivisible goods because the assumption of continuity is proved to be unrealistic. यानी कि in the case of indivisible goods, I can say, जो continuity का जो assumption था कि आपको consumption continuous करना चाहिए, वो यहाँ possible होगा नहीं। बहुत ऐसा कम होता है, it's a rare case कि हमने 2-3 टीवी साथ में खरीद लिया, हाँ ओके, या फिर 2-3 कार साथ में खरीद लिया, it's a rare case, I can say। तो हम उसको फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल केस में नहीं गिनते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक कार खरीदा, आपने एक टीवी खरीदा, तो अब अगला टीवी या अगला कार you are going to definitely purchase after a long interval. Yes everybody, so the assumption of continuity is proved to be unrealistic, and so we say yes, the law is not applicable in the case of indivisible goods, I can say. Next, in fact जितने भी हमने assumptions पढ़े, हमने पहला पॉइंट पढ़ा होमोजेनिटी, कि भाई सब चीज जो आप खा रहे हो वो क्या होना चाहिए? सेम इन कलर, सेम इन साइज, सेम इन शेप। यानी कि 5 एप्पल होना काफी नहीं है, वो 5 एप्पल भी कैसे होने चाहिए? सेम इन कलर, सेम इन टेस्ट। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। द एंटायर लॉ इज बेस्ड अपॉन अनरियलिस्टिक assumptions, I can say. ये जितने भी assumptions है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Alright? Yes, it is based upon the assumption of, I can say, homogeneity or a continuity or a rationality. These all assumptions are very difficult to have, I can say, in real life. Is it clear everybody? इसलिए दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बोला है yes, the entire law is unrealistic, I can say. Is it clear everybody? All right? And the last point says single want. याद है जब ये लॉ मैंने पढ़ा, when I taught you a law of diminishing marginal, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, और इंट्रोडक्शन मैंने एक लाइन बोला था कि this law is based upon single commodity model. Yes everybody? और वहां एक लाइन लिखा था कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, सिंगल बॉन्ड ऑफ अ कंज्यूमर कैन बी सैटिस्फाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यस एवरीबॉडी, यही तो बात है, यही तो बात है। यहां यही लिखा है कि लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लॉ क्या बोलता है? अ कंज्यूमर कैन सैटिस्फाई ओनली वन वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। But even this is not possible, students. In reality, a man has to satisfy number of wants, I can say. A man has to satisfy number of wants, I can say, at a point of time. Is it clear, everybody? एक साथ आपको बहुत सारे wants एक साथ में satisfy करने पड़ते हैं। आप एक-एक करके want satisfy करोगे, तो कब, for example, possible होगा सब चीज want satisfy करने का? Getting it, everybody? So, in reality, students, a man has to satisfy number of wants at a point of time, students. Is it clear, everybody? This becomes, yes, the criticisms, I can say, of the law of diminishing marginal utility, students. Alright, but in fact, I would like to say two big criticisms of what? The first is what? The cardinal measurement of utility, students. And yes, number 4, that the entire law is based upon certain unrealistic assumptions, I can say. Is it clear, everyone? Alright, तो ये basically आपका क्या हो गया?
criticisms, I can say. Okay, thank you. Guys, the next answer is said to be the importance of the law of diminishing marginal utility. How this law is practically important to the people and to the students and to the whole community students. Yes, everyone? We have 5 important points to understand. सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? That the law of diminishing marginal utility is said to be the base of law of demand. Yes, everyone? यानी आप लोगों ने जब यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा था, वहां तक आपने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। आप कोई भी चीज डिमांड कब करते हो? जब आपको लगता है कि उसमें यूटिलिटी है, तो बाकी तुम उसको डिमांड भी नहीं करोगे। यस एवरीबॉडी? तो जो पहला पॉइंट है वो वही है, इट इज सेड टू बी द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यस एवरीबॉडी? नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली, वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू लॉज, law of demand and the law of diminishing marginal utility. Yes, everybody? Now, exactly what happens? What does the law of DMU explains us? When the stock of the commodity increases, marginal utility diminishes. See, the stock is increasing 1, 2, 3. Your I can say MU is diminishing 8, 6, 2 and so on. Yes, everybody? लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला your stock of the commodity is increasing and say for example your MU is diminishing, but एक बहुत important चीज है, your stock is going to increase, your stock is going to increase only when the price falls in the market. Yes, everybody? समझो कि आपने पहला एप्पल 5 में खरीदा है और ये 5 रुपीस वाले आइटम से एप्पल से आपको कितना मिला? 8 रुपीस का सेटिस्फैक्शन मिला। से फॉर एग्जांपल, यस, आपने सेकंड एप्पल 4 में खरीदा, लेकिन ये सेकंड एप्पल अगर आपको 4 में नहीं मिलता तो शायद फॉर एग्जांपल आप ये एप्पल खरीदते ही नहीं। सिंस ये प्राइस फॉल हुआ, आपने सेकंड एप्पल डिमांड किया और सेकंड एप्पल डिमांड किया, तब जाके आपका एमयू का लेवल क्या हुआ? स्टूडेंट्स, डिमिनिशिंग। Are you following everybody? So this is, you know what happens over here? Stock is increasing, MU is diminishing. This is exactly your law of DMU. ये जो है वो क्या है? Law of DMU. लेकिन सबसे important चीज क्या है? When will the stock increase? Stock will increase only when the price falls. So price is falling and stock is rising. Price is falling and demand is rising, students. And this becomes the concept of law of demand. Are you following everybody? मालूम पड़ा सब लोग को? So stock is increasing, MU is diminishing, students. This becomes the law of DMU, students. But the stock is going to increase only when the price falls. So price is falling and demand is rising. This becomes, students, I can say the concept of law of demand. Are you following everybody? टेक वाइस वर्सा केस, अगर प्राइस राइज होगा, ये टेबल को उल्टा समझो, ये प्राइस राइज होगा तो आपका स्टॉक बेसिकली क्या होगा? फॉल होगा। 3, 2, 1। और स्टॉक अगर फॉल होगा तो आपका एमयू बेसिकली क्या होगा? स्टूडेंट्स, आई कैन से इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये जो पहला पॉइंट है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट, वंडरफुल। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। I don't know how many of them knows it, लेकिन ये आपने ये जो कॉन्सेप्ट है आपने 11th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। यस एवरीबॉडी? वैल्यू हैज 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन इज सेड टू बी वैल्यू इन यूज एंड वन इज सेड टू बी वैल्यू इन एक्सचेंज। यस एवरीबॉडी? दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किसका है? वाटर। तो वैल्यू इन यूज में हमने एग्जांपल लिया है वाटर, और दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू किसका है? तो से फॉर एग्जांपल डायमंड का। तो वैल्यू इन एक्सचेंज में हमने एग्जांपल लिया है डायमंड का। यस एवरीबॉडी? अभी हम लोग इन्हें दोनों को कंपेयर किया। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो आई कैन से वाटर हैज मोर यूज बट इट्स एक्सचेंज वैल्यू इज मेड फॉर 0। वाटर हैज मोर यूज बट इट्स एक्सचेंज वैल्यू इज मेड फॉर 0। बट डायमंड बेसिकली हैज लेस यूज बट डायमंड हैज अ हाई एक्सचेंज वैल्यू, स्टूडेंट्स, आई कैन से। समझ में आया? वाटर का यूज ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू 0 है, डायमंड का यूज कम है लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, यहां टेबल पे एक पानी का ग्लास पड़ा है और टेबल पे से फॉर एग्जांपल डायमंड का रिंग पड़ा है। मैंने समझो कि पानी का ग्लास पीता और उसके बाद से फॉर एग्जांपल डायमंड का रिंग पहना, व्हिच इज गोइंग टू गिव मी मोर सैटिस्फैक्शन? यस, अ ग्लास ऑफ वाटर विल फेच मी मोर सैटिस्फैक्शन देन अ डायमंड नेकलेस। यस एवरीबॉडी? तो इसीलिए यहां लिखा है द टोटल यूटिलिटी or a total satisfaction of water is more as compared to, for example, diamond. Is this concept clear? तो जरूरी नहीं है कि चीज महंगा है तो satisfaction भी आपको ज्यादा मिलेगा।
पानी जैसे चीज जिसका एक्सचेंज वैल्यू जीरो है, उससे भी आपको क्या मिल सकता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू यस आई कैन से अ वेरी एक्सपेंसिव पैकेट. Is this concept clear, everybody? So this difference between the value in use and the value in exchange, I can say, हम उसको बोलते हैं paradox of value, या हम उसका एक और नाम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं water diamond paradox. हम क्या बोलते हैं students? Water diamond paradox, I can say. Is this concept clear, everybody? All right, wonderful. तीसरा एंड चौथा प्रैक्टिकल हो गया. ये लॉ किसको काम करता है? It's useful to the consumers also and useful to the government also. पहले हम देखेंगे how this law is useful to the consumers, I can say. Yes, everybody. With the help of this law, the consumers are able to maximize utility. With the help of this law, with the knowledge of this particular law, the consumers are able to maximize utility, students, with the limited amount of resources. ये लॉ से कंज्यूमर को सीखने मिला कि इवन विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आई कैन से, हम कैसे कंज्यूमर्स जो है वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. गाइस, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. देन व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी कंज्यूमर? द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. यस एवरीबॉडी. तो जितना भी रिसोर्सेज आपके पास है, यस एवरीबॉडी, लोग 5000 में भी खुश है, 5 लाख में भी खुश है, लेकिन 5000 में कैसे खुश रहना वो आप लोग को आना चाहिए. ये लॉ आपको सिखाता है that how you can basically maximize your I can say utility level or a satisfaction level with the limited amount of resources, I can say. Is it clear, everybody? तो इसको हम basically बोलते हैं it's useful to the consumers, I can say. And last point is how it is useful to the government, especially how it is useful to the finance minister of the country, I can say. Yes, everybody. The knowledge of this law is very useful to the government and the finance minister in framing appropriate policies, I can say. जब कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनानी हो, जैसे कि प्राइस पॉलिसी बनाना हो, या टैक्सेशन पॉलिसी बनाना हो, या कोई ट्रेड पॉलिसी बनाना हो, yes everybody, ये सभी पॉलिसीज बनाने के वक्त they always take into account, students, I can say, the concept of law of diminishing marginal utility. I following everybody? Say for example, अगर हम बहुत recent example की बात करें, जब गवर्नमेंट को इंडिया में जीएसटी लॉन्च करना था, तो आपको पता है जीएसटी हर एक कमोडिटी पे अलग अलग लगता है. तो जितना नेसेसरी कमोडिटी था वहां बेसिकली गवर्नमेंट ने या तो जीरो या फिर बहुत कम अमाउंट ऑफ जीएसटी लगाया. यस एवरीबॉडी स्टूडेंट्स. तो ऐसे करके जब कोई भी पॉलिसीज बनानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि नेसेसरी कमोडिटी जो होता है वो हर गरीब से गरीब आदमी भी खरीदने वाला है. And it is going to give you maximum marginal utility, students, I can say. I following everybody? So एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया कि the entire concept of the law of diminishing marginal utility is very useful to the government, I can say. It's useful to the finance minister in framing the taxation policy, trade policy, price policy, etc. students. Is it clear, everybody? तो इसको basically हम लोग क्या बोलते हैं? The importance, I can say, of the law of diminishing marginal utility. Is it clear? So बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. कोई भी एक से पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पे आपको कुछ भी आ सकता है, या फिर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड से आ सकता है. इससे उसको एक इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. Is it clear, everybody? Thank you so much.